Wrong better, format. Hello, good afternoon students. Welcome to one more amazing session from Infinity Learn by Sri Chaitanya. मैं हूँ सुरेश, faculty of chemistry from Infinity Learn. How are you all, my dear students, beloved students? Yes, good to see you all guys here. Very good here. Who is developing? Shivans and Annamani is there. Yes, very good afternoon. Thank you very much. Hello, Hishita. Hi. Good afternoon. Thank you. Where is Richa Sharma? And waiting for you couple of sisters. Yes, I can see every day. I appreciate those students who are coming every day and getting benefit of these lectures. Yes, Megina, Pranati, good afternoon. Doctor, फिर भी डॉक्टर बन गया. गुड आफ्टरनून. के सनातनी, गुड आफ्टरनून. फारूक, very good afternoon. Welcome to NEET STEP UP 2025 program by Infinity Learn by Sri Chaitanya, and this program is on YouTube platform, and we are providing physics, chemistry and biology lectures for absolutely free of cost. And these sessions right away start from noon 12 o'clock to evening 6 o'clock. So as these sessions are completely NEET based, and you please get advantage of this. Ishita, thank you. Farooq, hello. Right, and these sessions are especially meant for those who are dropped from 12th and preparing for 2025 NEET examination, and also who completed in 11th to 12th promoted. And फिर भी ये टॉपिक 11th का है, सो जो भी 11th का बच्चा होगी फायदा उठाने की कोशिश करो माय डियर स्टूडेंट्स. वेरी गुड. एंड टुडे आज हम पेश करने वाले ग्रेड 12 का केमिकल बॉन्डिंग. हमारा यूट्यूब चैनल में जो नीट क्लासेस में केमिस्ट्री के तरफ से week first 3 days are going to be 11th standard topics, and next 3 days are going to be 12th standard topics. My dear students, in 11th standard topics we completed yesterday structure of atom, and we are starting with chemical bonding for today's class, and we will be discussing next 3 days for the organic chemistry, especially for 12th grade. So for फिलहाल अभी alkanes, GOC complete के, and alkenes, alkynes and arenes and haloarenes and alcohols भी complete किया. So you just follow this dual band of this 11th and 12th mixed lectures by chemistry faculty, and we will be joining in the molecular structure and chemical bonding. ये chapter का जो importance है ये direct भी indirect भी आने वाला है. So ये टॉपिक से दिस इज एक्चुअली द बैकबोन ऑफ द पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. सो टोटल नीट एग्जामिनेशन में आपका 35% और 33 अप्रोक्सीमेटली यू विल बी इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो बच्चे लोग सोच रहे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा रट्टा मारने वाले, बिल्कुल नहीं है बेटा. कभी कभी कर सकते, लेकिन हर चीज रट्टा मारने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं है. सो ये केमिकल बॉन्डिंग की वजह से थोड़ा सा लॉजिक टूट देना पड़ता है. लॉजिक पकड़ के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रीजनिंग क्वेश्चंस करना है, पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. सो आपका जो भी हाइड्रोजन कंपाउंड्स है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी एंड एफ ब्लॉक है, एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी है, एंड सॉल्ट एनालिसिस भी है, एंड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी, सारे के सारा एक केमिकल बॉन्डिंग का एक बैकबोन होना चाहिए. सो अगर आप केमिकल बॉन्डिंग में अच्छा करने तो सो केमिकल बॉन्डिंग गिव्स ए लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. हाय सानिया, हेलो. एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल एज काइंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी कभी आपका आएगा ना बॉन्ड मैकेनिज्म्स, bond breaking, bond forming, electronegativity, and how this overlapping takes place. Everything is based on chemical bonding. यही इतना important topic है. So don't leave it. We are going to provide these lectures. कम से कम 4-5 lectures होना चाहिए chemical bonding का. And ये concept का वजह से आपका ये questions, multiple choice questions भी आपका तैयार है. Okay, शुभम, शुभम हर दिन आता है. सानिया, गुड आफ्टरनून.
ओके शुभम स्पैमिंग मत करना, यू आर ए गुड स्टूडेंट, आई नो इट एंड विल डू द बेस्ट, है ना। सो क्या क्या चीज है इसमें पढ़ने के लिए। सो आई जस्ट वांट टू गिव डायरेक्टली, पहले जो है क्वेश्चन लुईस अप्रोच है ऑक्टेट रूल का वजह से, उसके बाद आएगा आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड, इसका कंडीशंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, हाँ जाम्बिया डेविड सिताली, एंड कोवेलेंट बॉन्ड आना है, बाद में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR थ्योरी एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसमें हाइब्रिडाइजेशन आएगा, एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड बॉन्ड पैरामीटर्स। सो ये बॉन्ड पैरामीटर्स अच्छा काफी आपका क्वेश्चंस निकले का संभावना है, एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हर चीज क्वेश्चन का ही और दूसरा क्वेश्चन पकड़ने के लिए भी ये सारे के सारा कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज डोंट लीव ए सिंगल लाइन फ्रॉम NCERT or any reference book. So focus on actual things that is happening. Okay, so let's start. Why to waste our times? Okay, directly we'll go into the chemical bonding. In this chemical bonding, just a minute. Yes, so formation and the cleavage of chemical bonding. A bond, atoms actually they are not stable in isolated state. So जो periodic table में जो elements आपका पास है ना, जो elements free state में exist करता है नहीं करता है, नहीं करता है, except a few elements like noble gases or noble metals. लेकिन and some all the elements सारे के सारे जो reactive है. So when a atom forms a molecule, that is formation of a new bond. Sometimes the bond has to be broken and should form another compound. So we need to learn the chemistry is almost, it is a study of chemical reactions. उसमें वो पुराना bond break करना है, a नया bond form होना है. So how the old bonds are broken and how the new bonds are formed. And there is a term called bond. If you know the nature, characteristics of that bond, you can make it and you can break it according to your convenience, according to the system, according to the reliabilities. And that is given as the formation and cleavage of a chemical bond. So actually an atom, atom का बीच में कुछ attraction forces होगा, फिर भी repulsion forces भी होगा. So जहां पर attraction forces are equal to repulsion forces, तभी ये दो atom का बीच में bond होना है. So attractive force tend to bring the two atoms close to each other, whereas repulsive force tend to push them apart. Okay, when a bond is formed, the attraction forces should be equal to the repulsion forces. Experimentally, it has been found that magnitude of new attraction force is more than that new repulsion force. Then only they can come together and form a bond. So as a result, two atoms approach each other, then the potential energy decreases. And the condition is going to be attraction force should equal to repulsion force, तभी ये bond stable होगा. Okay? अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो रिपल्शन फोर्स, तभी ये पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, एंड रिपल्शन फोर्स इज ग्रेटर देन अट्रैक्शन फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है. शुभम है ना? राइट. सिंस द एनर्जी गेट रिलीज्ड व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम. सो अगर एक हाइड्रोजन एटम ले लो, मान लो एक हाइड्रोजन एटम है गैस स्टेट में और एक हाइड्रोजन एटम मिलके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना चुका, इसका वजह से 435.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज किया, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज्ड. यू कैन सी द डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एंड द पोटेंशियल एनर्जी. सो इट ऑलवेज कम्स लाइक दिस. It always comes like this. So this is the minimum possible value of the energy. Ishita, देखना, Richa is there or in the class?
So this is the distance, what you call it as bond distance. And यहाँ attraction forces are equal to repulsion forces. यहाँ attraction forces कम है, okay, attraction forces ज़्यादा है. Okay, so we'll go with that. So in order to form a stable bond, there is an equilibrium between attraction force and repulsion force. Then only two atoms can stay together. दोनों के bond form होता है ना? And what about Sania? Sania, good afternoon. You are watching from Zambia, David Sital. Okay. So you are preparing NEET from there. Here so many students are there. Right now in this NEET Step Up 2025 program, I could find so many students watching overseas and getting benefit of this preparation of NEET examinations. है ना? ये ग्राफ एक बार देखने, एक मिनट. Yes. Now we'll see the formation of ionic bond, Koshal-Lewis approach. Koshal and Lewis, first time they have taken octet rule into the consideration and given how a bond is formed between two atoms, my dear students. Okay? Yes. Priyanka Mandal. Yes, ये क्लास फ्री में है. बिल्कुल हमारा ये YouTube सेशंस है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. सो पैसा कमाना के हम नहीं कर रहे हैं. ओके, शुभम क्या बेटा स्पैमिंग मत करना के बोला है ना. नो जॉइनिंग. द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल of an atom are called valence electrons. The electrons present in the inner shell of the atom are called core electrons. If you talk about sodium, it is 1s2, 2s2 and 2p6 and 3s1. If you talk about, this is your shell number 1, this is your shell number 1, K shell, L shell and M shell. ये जो बाहर का बाहर इलेक्ट्रॉन देख रही है ना, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का है. इससे आपका अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दे आर कॉल्ड एज अ कोर इलेक्ट्रॉन. समझे? हाँ, यस, MBCHB डेविड. ओके, नाउ ये कोशल-लीविस क्या कह रहा है, आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, यो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ओनली पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग फॉर्मेशन, कोर इलेक्ट्रॉन्स नहीं पार्टिसिपेट कर सकते. ओके, सो एटम हमेशा वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहने का कोशिश करता है. ओके, ये 8 इलेक्ट्रॉन रहने के लिए ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते और शेयरिंग भी कर सकते. So always any atom try to attain 8 electrons in its outermost shell. For that it may lose electrons or can gain electrons, can share electrons, and then get 8 electrons so that it gets stability. So this is what you call it as octet rule. So octet rule का वजह से आपका जो structures बना दिया. हाँ प्रियंका, yes. You're new, no problem, we can go with this, no issues, right. So the nucleus along the core electrons form the positively charged kernel. Example, sodium atom has only 1 valence electron and 10 core electrons. अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो आपका जो बचेगा 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में बचेगा. उदय निवाल, हाँ उदय निवाल, हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म में पूरा नीट एग्जामिनेशन का सिलेबस हर सब्जेक्ट का खत्म करने वाला है हम. ओके, सो एवरी टॉपिक एंड एवरी डाउट इज गोइंग टू बी आपको एड्रेस किया जाएगा. हाँ, कवर होगा उदय, कवर होगा पक्का. फिलहाल हम खत्म किया स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन 11th स्टैंडर्ड से, एंड जीओसी, हाइड्रोकार्बन्स, alkane, alkene, alkyne and benzene is completed from 11th standard. जो 12th standard में solutions and colligative properties किया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किया
एंड हैलो अल्केन्स हैलो एरेंस किया, अभी चल रहा है अल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर्स, एंड फिर भी रिवीजन सेशंस भी होगा उदय निवाल. सो एवरी डे इट इज बेस्ड ऑन ए प्लान्ड सेशंस एंड प्रैक्टिस सेशंस भी होगा, माइंड इट. सो बच्चे लोग सोच रहे थे ये यूट्यूब चैनल में फालतू चलता है, ये फालतू कभी भी नहीं चलता है बेटा, यहां पर सिर्फ सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं, है ना. सो वी रिक्वेस्ट यू गाइस प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, नथिंग मोर देन दैट, है ना. सो हम कुछ बच्चे लोग के लिए भला करने का कोशिश कर रहा हूं, आपको सिर्फ लाइक मारना तो हमको भला होगा, बस इतना ही है, पैसा कमाना के नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना बेटा. ओके चलो. सो यू कैन सी the valence electrons are responsible for the chemical reactivity and the core electrons generally do not participate in chemical reactions, right. प्रियंका मंडल हर दिन 12 बजे से शाम 6 बजे तक क्लासेस होगा, ओके. फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का, बॉटनी, जूलॉजी का भी. केमिस्ट्री हर दिन 1:30 to 3 o'clock बेटा. थैंक यू उदय निवाल, थैंक यू बेटा, थैंक यू, वेरी गुड, नाइस कॉम्प्लीमेंट्स. हाँ आप जो कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं ना हमको बहुत अच्छा लगेगा. Thank you very much. Let us go ahead about the valence. 1:30 to 3 o'clock. हर दिन 1:30 PM to 3 PM. 1:30 PM to 3 PM. Chemistry class. Okay. शायद कल नहीं होगा और परसों से फिर शुरू होगा, कल कुछ काम चल रहे हैं इसीलिए, ठीक है. मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे. सो यहां पर आपका चैट बॉक्स में कुछ लिंक दिया, टेलीग्राम चैनल एट गूगल फॉर्म पे दिया हुआ, ओके. यू जस्ट ज्वाइन इन दैट, ओके. टेलीग्राम चैनल में आपको हर क्लास का अपडेट मिल जाएगा, है ना. एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म सो दैट यू विल बी गेटिंग हर सेशन का अपडेट निकलेगा, ओके. 1 घंटे के पहले आपको सेशन का अलार्म भी आने वाला है ना. नेक्स्ट, ऑल द एलिमेंट्स विद जीरो ग्रुप हैज अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इन लोग का NS2 NP6 है, ये 8 इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट बन गया. Except helium, it has 2s2 configuration. Except helium, this is what you call it as 2s2. This is what you call duplet configuration. Duplet configuration. ये octet configuration. एंड सबको पता है ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन हमेशा स्टेबल है, यहाँ पे डुप्लेट भी स्टेबल है प्रियंका. हाँ, इफ यू ज्वाइन हर दिन आपको क्लास का आएंगे तो आपका 720 प्लस मिलेगा, है ना. 700 प्लस कम से कम मिलेगा, बिकॉज अच्छा तरफ अभ्यास करना पहला रूल नंबर 1 है ना. रूल नंबर 2, जो टीचर बता रहे हैं ना वो ऐसे फॉलो करना, ओके. You can get a very good score, you will get a good decent government medical college. अरे बेटा, that is not the way. You can be a topper also. आप टॉपर भी बन सकते हैं, ओके. मैं वादा दे रहा हूँ, लेकिन आप अभ्यास अच्छा तरफ करना, ओके. हमारा जो क्लासेस आ रहे हैं ना, ये स्लाइड्स आपको PDF फॉर्म में टेलीग्राम चैनल में आपको सारा के सारा टोटल कंटेंट आपको निकलेगा, ओके. जो क्लास कर रहे हैं ना वो क्लास का नोट्स भी मिलेगा आपको free, and everything you can get. rank prediction program में Google फॉर्म दिया, so you can get into that. इस लेक्चर के साथ कुछ एक्सरसाइज करना का अच्छा होगा उदय निवाल, है ना बेटा. राइट, हाँ आप पक्का 700 प्लस स्कोर कर सकते हैं प्रियंका मंडल.
यकीन रख लो, पक्का होगा। सो हर दिन हमारा क्लासेस अटेंड कर रहे हैं ना, इशिता कर रहे हैं, ऋचा शर्मा कर रहे हैं, एंड अभिनव कर रहे हैं, सो मेनी स्टूडेंट्स, नियर अबाउट 300 स्टूडेंट्स आर देयर इन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म एवरी डे, हर दिन आ रहा है वो लोग, है ना। सो दे आर गेटिंग इम्प्रूव्ड। इशिता, आर यू गेटिंग इम्प्रोवाइजेशन इन द सेशंस when you join with me classes? Ishita is going to respond here, right? Thank you, we'll go with. So मेरा सवाल है कि ऑक्टेट सब पता है, ऑक्टेट इज स्टेबल एंड डुप्लेट भी स्टेबल है। ऑक्टेट डुप्लेट दोनों में डुप्लेट ज्यादा स्टेबल है ऑक्टेट से, है ना। सो ये चीज ख्याल में रखो। So helium is the most stable atom in the entire periodic table as compared to the other noble gases as well, है ना। And all the elements other than zero group elements are chemically react. Yes, Shubham, and they less gain at electrons their outermost shell. Okay, so Pakka, Priyanka, definitely it will come. I think you are from somewhere at Odisha or so, Priyanka. आप ओडिशा से क्या? Okay. So generally every atom tends to acquire 8 electrons in its outermost shell, and the principle acquiring 8 electrons in the outermost shell of an atom to attain stability is called octet rule, right? So ये octet rule का वजह से हर atom इसका वैलेंसी सेल में इसका वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मिलने का कोशिश करता है। ये 8 इलेक्ट्रॉन मिलने के लिए ये वैलेंसी सेल से इलेक्ट्रॉन बाहर आना सकते हैं एंड अंदर आ सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स और गेन इलेक्ट्रॉन्स और कैन शेयर इलेक्ट्रॉन, देयरबाय दे अटेन स्टेबिलिटी। यही है आपका ऑक्टेट रूल। एंड ये अटेन करने के लिए सो लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, इसका वजह से इसका आयोनिक बॉन्ड होगा और शेयर कर सकते, इसका वजह से कोवलेंट बॉन्ड कर सकते हैं। यू हैव कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी है। सो कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अभी शुरू करेंगे आयोनिक बॉन्ड। आज प्रियंका मंडल, आप बोल सकते हैं आपका प्रॉब्लम है क्या? ओके, आयोनिक बॉन्ड, ये बॉन्ड आपका बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, यूर एन एसएमई मीडियम स्टूडेंट, आप हिंदी एंड इंग्लिश भी कर सकते हैं हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म में, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सरसाइज कर सकते हैं। उदय, आफ्टर दिस कॉन्सेप्ट विल डू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। महक, एक्सेप्शंस भी है, आई विल टेल सुपर ऑक्टेट एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंस, एक्सेप्शंस भी है। महक, आई विल डू दैट। Okay, difference between ionic and covalent bond. Xavier, MKC. Okay, you come and ask a couple of questions here and there and go, but you don't. Yeah, come on, let us talk about. Yes, Ishita, thank you. Now let's talk about ionic bond. After ionic bond, so you wanted to go for the exceptions, no? So there are some exceptions for the octet rule. So जो स्ट्रक्चर है, सो ये स्ट्रक्चर में अगर सेंट्रल एटम के 8 इलेक्ट्रॉन्स, महाराष्ट्र, ओके उदय, सो 8 इलेक्ट्रॉन्स दैट इज ऑक्टेट। इफ लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ओके, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। या Mehak, you are asking about that. I am addressing your doubt. So less than 8 electrons, example beryllium chloride and boron trifluoride or anything it can. So you can say SnCl2 or many things are there, right?
So in general, any beryllium compounds, boron compounds are going to be electron deficient. They have less than 8 electrons, right? Now और एक चीज है, more than 8 electrons. The more than 8 electrons, they are called superoctet compounds. Superoctet compounds. Superoctet compounds में आपका आ जाएगा SF6, SF6, IF7, etc. PCl5 kind of things. And they have more than 8 electrons and they have less than 8 electrons. But Kushalan-Lewis है ना, he failed to explain the stability of superoctet compounds and electron deficient compounds or hypooctet compounds. ठीक है? So yes, is that fine, Mehak? Is that fine? So as somebody asked a doubt, I am addressing the doubts. Now let's talk about ionic bond and covalent bond. We will come back. Xavier? Yes. Now let's talk about ionic bond, the electrostatic force of attraction between oppositely charged ions is called ionic bond. Here a cation, positively charged ion is called cation and a negatively charged ion is called anion. And there is an attraction forces between the cation and anion. Yes, superoctet. PCl5 is a superoctet compound. Yeah. So there is an electrostatic forces of attraction between these two ions, that is called ionic bond. And this cation is formed by the loss of electron and anion is formed by gain of electron, that we are going to discuss here. So the ionic bond is formed by the transfer of electron between an atom of low ionization energy and an atom of high electron affinity. So इलेक्ट्रॉन देने वाले का आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल सकते, एंड इलेक्ट्रॉन लेने वाले के ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी चाहिए, इसका वजह से ये इलेक्ट्रॉन पकड़ सकते। सिर्फ सोडियम जो है इसका ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन जो है इसका ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, इसका आपका निकलेगा पॉजिटिव चार्ज एंड इसका निकलेगा नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज का बीच में अट्रैक्शंस होगा, no direction. This attraction is called ionic forces of attractions or electrostatic forces of attraction. So this bond is called ionic bond. So the electronegativities of the element A and B and the nature of AB bond. अगर element A, element B, so electronegativity of element is low and element is B, so transfer of electron takes place from here to here and this forms ionic bond. Yashita, no problem. Yes, definitely I'll take care of it. And if it is high electronegativity and he is also having high electronegativity, so he can't give or he can't take, so that there is going to be a mutual sharing of electrons, so that they are going to form a covalent bond. And here the low means it could be a metal and it could be a metal, so that it is going to form a metallic bond, and we will discuss about the metallic bond at the end of the story. And the difference in the values of electronegativity should be greater than 1.7 for this bond formation. And if you see the periodic table, yes, everything is neutral, my dear students. Once the bond is formed, the system that is formed is supposed to be neutral. Xavier, you said is correct. Yes, of course. So if electronegativity difference, you can say En means electronegativity of element A minus electronegativity of element B.
if the electronegativity difference delta En is greater than 1.7, then the bond is going to be ionic bond, my dear students. Yes, it is. And if the electronegativity difference is less than 1.7, the bond formed between these two is called a covalent bond, and exactly 1.7, that is going to be polar covalent bond. So based on these particular terminologies, you may be expecting a question from MCQ in the NEET examination. Fine, thank you. Atoms of elements with low ionization energy tend to form cations. Of course, they are metals. While those with high electron affinity tend to form anions, they are nothing but non-metals. Okay, so metals and non-metals, these two are going to form ionic bond in general. So favorable condition for the formation of ionic bond. So what kind of atoms they can form ionic bond? Yes, between two atoms. So in that, one should form a cation and another should form anion. And once the cation and anion is formed, between these two there is an attraction forces, then you can say it is ionic bond formation. For that, we need to get ready with cation and we need to get ready with anion. So once the cation and anion are ready, they are going to attract. So that what are the conditions that form ionic bond? So that we need to form cation, we need to form anion, my dear students. So let's look at the cation formation of a cation. So who can get the formation of cation? Cation is formed by, Ishita, cation is formed by losing electrons. So let us see what are the conditions that can lose the electron. Yes, atoms supposed to be big metals, S block, and they should have low ionization energy. Generally the metal atoms lose electrons. Okay, generally the metal atoms lose electrons to form positively charged ions, that is called cations. Okay? And with low ionization energy, elements with low ionization energy can form cations easily, right? Like one more charge. So low charge on the ion. You can see here a low ionization energy. Ionization energy order is going to be lithium greater than sodium greater than potassium rubidium and cesium. So ease of formation lithium plus sodium plus potassium plus cesium plus. So this has the lowest ionization energy that can be easily formed. That is the ease of formation. Are you getting or not? Clear? Fine, that's good. Xavier, hope you understood. One day I think you're asking about a NEET examination rank related to you will get a seat or not. Is that you? So I remember every student. Yes, I remember every student in the class. It indicates that, yes, it indicates that a teacher is taking care of you, my dear students, right? So here students are coming with a lot of ambition. We respect that ambition. We are doing the benefit of this ambition, right? Yes, thank you. And let us talk about the charge. The ion with less charge on it can be easily formed. So जिस आयन के उसमें कम चार्ज है ये आसानी से कर सकते हैं. So the cation must have low ionic positive charge. So ease of formation sodium plus is greater than magnesium plus is greater than aluminum plus. And of course ease of formation, it has सिर्फ ionization 1 इस्तेमाल करना, यहाँ पर ionization 1 और ionization 2 भी इस्तेमाल करना.
यहाँ पर आयनाइजेशन 1, 2 एंड 3 एंड 3 आयनाइजेशन एनर्जीज इस्तेमाल करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है, बहुत आसानी काम है यहाँ पर, है ना। सो चार्ज कम है, formation of easily can be formed. So I want to say ion with Ishita, ion with less charge on it can be easily formed, okay, than ion with more charge on it. That's the key point there, okay. Now abhi formation large atomic size. The metal atom must have a large atomic size. Hi, okay. So I want to say ionization energy inversely proportional to size. So if the size is large, ionization energy is very less, so that easily it can form. So ease of formation, metal ions, lithium is less than, sodium is less than potassium, rubidium and cesium. So ease of formation of cesium plus is greater than, rubidium plus is greater than, potassium plus is greater than, sodium plus is greater than, lithium plus, वो लॉजिक हम देख चुका है पर the same thing it is given, right? Now let's talk about here some more points. And cation with inert gas configuration. So inert gas configuration is 8 electrons on the outer shell is called inert gas configuration. अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में होगा तो दैट इज सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन. दैट इज व्हाट यू कॉल इट ए सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन और सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. आपको कैसा पता चलेगा ये वाला? आई विल टेल यू. द कैटआयन फॉर्मर मस्ट हैव NS2 NP6 outermost configuration. That is calcium, it has 2, 8, 8 has inert gas configuration, that is inert gas configuration, while zinc has pseudo inert gas configuration. So therefore calcium 2 plus is formed more readily than zinc 2 plus. You want to see the zinc 2 plus configuration? Zinc, that is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 3d10 and 4s2. And if zinc 2 plus is formed, these two electrons are lost, so that zinc 2 plus का configuration आपका आए ना. So it is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 3d10 dot. So you can count it, here. How many electrons are there? 2 plus 6 plus 10 is equal to 18 electrons. So 18 electrons is pseudo noble gas configuration. Pseudo noble gas configuration less stable है noble gas configuration क्या वजह से. So Uday Niyal, we hope you understood, right? That's good. So cations with inert gas configuration can be easily formed as compared to the cation with pseudo noble gas configuration or pseudo inert gas configuration. Dear students, clear? Is that fine? Yes, thank you very much. Yes, keep charting in the chart box so that we will come to know whether you are understanding or not. Here good number of students are asking very good and decent questions in today's class. Yes, thank you very much. So formation, so far we have seen the formation of the cation. Now we are going to see the formation of anion. So this is about formation of anion we are starting, right? So in the formation of anion, my dear students, element with high electronegativity can easily lose electrons, so they can form anions easily. So that you can say low charge on the ion, it could be a cation or it could be anion. So ion with less charge on it can be easily formed. So जो भी आयन है, कैटायन भी एनायन के, ये रूल कॉमन रूल है. Yes, yes, thank you Uday Niwal, thank you very much. And here low charge on the ion, यहाँ पर देख सकते हैं आप F minus -1, O2 minus -2, N3 minus -3. So जिस आयन में आपका कम चार्ज है वो आसानी फॉर्म कर सकते हैं.
So the ion with less charge on it can be easily formed. So that ease of formation F minus is greater than O2 minus is greater than N3 minus. अरे बेटा इसका नाम क्या, इसका नाम क्या उदय, आयन का नाम क्या, ये आयन का नाम क्या इशिता, थैंक यू थैंक यू। ये वाला आपका नाइट्रेट आयन, नाइट्राइड आयन। और एक चीज है ख्याल में रखो, N3 माइनस दे बोला ए अजाइड आयन, दिस इज अजाइड आयन। देखने का सेम, हाय रमेश, यस देखने का सेम लगेगा लेकिन अलग चीज है। यस अजाइड आयन, नीचे वाला है एसिड आयन, ऊपर वाला है ये नाइट्राइड आयन है। ओके काम आ जाएगा, ख्याल में रखो। नाउ स्मॉल एटॉमिक साइज of the non-metal, the atomic radius of the non-metal should be small, तभी ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का नजदीक में होता है, सो इलेक्ट्रॉन पकड़ने का आसान काम है। द एटम विथ a small size, so the nucleus is close to it, so that gaining of electron is easy task for the process, right? Now anion with inert gas on it, so again anion and cation, whatever inert gas is going to be stable, NS2 NP6. Okay, that's very important. Now I just want to introduce you Fajan rule. Fajan rule. So for what Fajan rule tells you? Yes, any difference? Yes, there is a lot of difference in azide and nitrate ion, my dear Xavier. That's what I want to say. Look at this, Xavier. Nitride N3 minus 1 nitrogen atom and 3 electron gained. Azide ion 3 nitrogen atoms together 1 electron gained. You understand, there is a lot of difference. You can see the atomicity. Atomicity for nitride ion is 1, atomicity for azide ion is 3. Got it? Any doubt? Yes, thank you very much. Now let's talk about Fajan rule. The Fajan rule tells us the polarizability. What is the meaning of a polarizability and a polarization? Yes, Sanatani, yes, both have the same number of shells. Sir, which has the bigger atomic size, anion or inert gas? Anion. Anion. Anion is always bigger than noble gas. But in the noble gases, the parameters we take van der Waals radius, so van der Waals radius values are bigger. But if you take the same parameter, anion is always greater than noble gases or inert gases. Fine? Sanatani? प्रियंका, हाँ हिंदी में भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रियंका, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो पोलराइजेशन, ये पोलराइजेशन है क्या? इट्स वेरी सिंपल। जो कैटायन है ना, एनायन है, देखो ध्यान से देखो, कैटायन एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, इस तरफ खींचना है, सो इट अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द कैटायन। यस, नाउ so the electron is coming towards the cation like this, cation like this, है ना, cation like this. Are you getting or not? So that what happened? This process, what do you call it, as a polarization. Before attracting, ये चांद का जैसे था, आफ्टर अट्रैक्टिंग ये मुर्गी का अंडे के जैसा बन गया। ओके, सो व्हाट हैपेंड, द डीफॉर्मेशन ऑफ
anion by cation is called polarization, है ना. A polarization, deformation, Ishita, yes, deformation of anion by cation is called polarization. ये polarization का वजह से anion का electron cloud shape उड़ गया, है ना. So due to polarization, anion's electron is coming between cation and anion, so that looks like sharing. So this polarization leads to covalent behavior of the ionic compound. So this is what you can say Fajan rule. अगर ये क्वेश्चंस ये ionic bond से आना है तो Fajan rule से आना है. So NEET examination में this is very important. If you get a question, you will get a question from Fajan rule, and let it be any kind of competitive examination, my dear students. We can call it as an electron cloud, of course. Uday Niwal, yes. So polarization power किसका होगा? So ये polarization किसका वजह से हो रहा है? कैटायन का वजह से हो रहा है. कैटायन का polarizing power होगा, and anion is getting polarized, so anion will get a polarizability. And two terminologies, polarizing power and polarizability. You know, the ability of cation to polarize a nearby anion is called polarization of the cation. You know, so the cation and the anion. So when it is attracting, na, you see anion size is, this is cation and this is anion. Anion shape is distorted. This is what you call it as polarization, and polarization is directly proportional to covalent character. This is what you call Fajan rule. This is what you call Fajan rule. So what happened? Cation and anion का electron खींचने तो कैसे हो रहे? So electron region of hydrogen and fluorine, so it is getting deformed. This is what you call it as Fajan rule. More polarization, yes, more polarization, more will be the covalent character. Okay, ionic character, covalent character हमेशा उल्टा फुल्टा होता है ना. Right, let's go into the details of this. In general as compared to cation, Uday, do anion usually bigger size in general as compared to the cation? That's what I want to make it here. Cation का size कम size दिया, anion का size बड़ा size दिया, है ना. Now Fajan rule, size of the cation, polarization of the anion increases as the size of cation decreases. So polarization, size of cation inversely proportional, ये रूल है. सो जिस कैटायन का साइज कम है उसका पोलराइजेशन ज्यादा है. सो इन अ ग्रुप बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड, बारियम क्लोराइड. सो बेरिलियम का साइज कितना है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, barium. So size is increased, size of cation increases, so that covalent character decreases. So this is barium chloride less covalent, it is more covalent. So ionic character increases and it is less covalent. आप मोर आयनिक भी बोल सकते हैं, मोर आयनिक भी बोल सकते हैं. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड. उदय निवल, थैंक यू वेरी मच. सो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं ना यूट्यूब चैनल में, सो दे हैव जीरो नॉलेज, दे मे बी हैविंग कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड. वंस दे अटेंडेड द क्लासेस विथ मी ना, they are really doing good, really doing good. That satisfaction gives me a lot of boosting energy. Right, लगे रहो, जीते रहो बेटा. Thank you very much. So greater the polarizing power, beryllium 2 plus shows its maximum covalent character in a period. So more covalent character, right? Sodium, magnesium, aluminum,
silicon 4 plus, size of cation decreases, covalent character increases, charge B है. So I just want to talk about another parameter, charge. First you have to take care of the charge also, and the feasibility. Yes, the feasibility of having some covalent character can be predicted by using Fajans rules. The actual use of the Fajan rule is this only. Fajan rule एक कोवलेंट जैसे बिहेव कर रहे, आयोनिक जैसे बिहेव कर रहे, हमको कैसे फायदा क्या है? If a chemical reactivity is there, whether it is reacted or non-reacted, soluble, insoluble, है ना? And we say organic chemistry में you don't know the chemistry, chemical bonding, and you talk about the Finkelstein reaction. I'll tell you Finkelstein reaction. This is out of control. So Finkelstein reaction RCl when it is reacted with sodium iodide in the presence of acetone, you are going to get a Ri. You are going to get Ri plus NaCl. This is what you call it is a Finkelstein reaction. यह फिंकेल्स्टीन रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, लेकिन ये केमिकल बॉन्डिंग का लिंक क्या है, क्या चीज है? सो जो सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर रहे हैं ना, दिस इज आयोनिक, राइट? ये आयोनिक कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन एसीटोन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सो दैट सोडियम क्लोराइड इज इनसॉल्युबल, प्रेसिपिटेट कर रहे हैं. इसी का कारण ये रिएक्शन हमेशा आगे बढ़ने का कोशिश करता है. सो ये फाजन रूल, ये आयोनिक है, कोवलेंट है, आपको पता चलना है. आर यू गेटिंग ऑन इशिता? फाइन, वेरी गुड, नाइस. दैट्स वेरी 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 नाइस इंटरेक्शन हियर इन टुडेज क्लास. ओके, so the feasibility of having some covalent character can be predicted by using Fajans rule, dear children. These are the presentations that are made by me for your better understanding. Okay, so Uday, Nival, Ishita, Xavier, hope you enjoying these presentations, and is it understandable? एक बार thumbs up दे, एक fire emoji दे chat box में, एक बार देना हमको खुशी होता है. Yeah, that's good, very nice. Now a compound is more likely to be covalent if, yes, that's great, that's great. A cation, small size, high charge on it, it is highly polarizing and attracts the electrons of the anion, so that it is more polarizing. More polarizing means more covalent. More covalent. Anion, large size and high charge on it, is highly polarizable and will be easily distorted, so that it is going to be more covalent. That's very very important. That's very important. Sir, एक ट्रिक बता दो ना. हाँ, क्या दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं? ये स्मॉल साइज of cation, a large size anion, a जैसे combination है more covalent, more covalent. ख्याल में रखो, किसी क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं. एंड दूसरा चीज है a large size, a small size, ये कॉम्बिनेशन उल्टा है, ये कॉम्बिनेशन मोर आयोनिक होगा. बस ये कॉम्बिनेशंस, ये वाला ख्याल में रखो. आप कोई क्वेश्चन आप कर सकते हैं. सुरेश सर आपको सिर्फ आपको दे रहे हैं, ट्रिक है. यस, दैट्स ग्रेट, ये ट्रिक है. कहीं भी इस्तेमाल करो, केमिकल बॉन्डिंग में करो, पी ब्लॉक में करो, एस ब्लॉक में करो, ऑर्गेनिक में भी करो, कहीं भी करो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, कहीं है. ओके, सो टेलीग्राम लिंक इज गिवन इन द chat box, you can see, and you can join Uday, Xavier and other students.
Okay, Priyanka, you can simply join there and you will get all updates regarding the sessions. Right, my dear students. Now let's talk about size of the anion. So if the size of the anion increases for a given cation, the covalent character increases and the nature of polarization is directly proportional to size of anion. You talk about calcium fluoride, calcium chloride, calcium bromide, calcium iodide. So fluoride, F minus, Cl minus, Br minus, I minus. As the size of anion increases, polarizing power, polarizability increases, covalent character increases. Okay, so it is more covalent, and it is less covalent. Less covalent means it is more ionic, भी बोलना. And फिर भी charge on cation and anion in anion or cation. Any ion with more charge on it is going to be more covalent because they have the more polarization. You can see sodium plus 1, magnesium chloride plus 2, aluminum chloride plus 3, silicon 4, silicon tetrachloride, silicon 4 plus. More covalent, this is more covalent, it is more covalent. And it is more ionic. So this is a pretty logic oriented, dear children. If you understand that logic now, you can do many questions, and many multiple choice questions are available right now in today's class. After having these slides, I am going to discuss multiple choice questions. Stay tuned in this class, stay tuned. Don't leave the session, stay tuned. And it is going to be electronic configuration. Agar if you have, yes, if you have noble gas configuration, it will be more ionic. If you have pseudo noble gas configuration, it will be covalent, right? So you can see more ionic melting point is directly proportional to ionic nature. I mean to say ionic compounds will have more melting point and covalent substances will have less melting point. Now if you see copper chloride melting point 442 degrees centigrade, sodium chloride melting point 800 degrees, less melting point means it is more covalent. It is high melting point, which indicates it is more ionic. If you check the electronic configuration of sodium plus 2, 8 and copper plus 2, 8, 18 pseudo noble gas configuration, it's a pseudo noble gas configuration. Xavier is asking something. Ionic is directly inversely proportional to size of atom, that you can't say. It is atom ka matlab it is Xavier, you have cation and anion. Ionic is directly proportional to size of cation, that is better. Uday Niwal wanna say here our examples note में लिखते or is enough. Yes, it is enough. Okay, अगर आप लिखना चाहता हो तो क्लास में तुरंत आप लिख सकते है ना. अगर आपको चाहिए तो ये सारा के सारे क्लास आपको PDF फॉर्म में मिलेगा. ओके, ये टेलीग्राम चैनल में. उदय निवाल, Xavier, for anion, if size of anion is bigger, inversely proportional, okay, you can say inversely, ionic inversely proportional to size of anion. Better you can say that. Fine. Now, so
Kappa 2 plus Na plus both cation pseudo and inert gas configuration of the same charge, but polarizing power of copper plus is more than sodium plus. Similarly, zinc here that is given. Now talking about this is a trick. Everything you can use it for NEET examination directly. You can crack multiple choice questions based on this logic 1, 2, 3, 4, 5, 6. So far, hey Richa, you're late or you didn't say hi so far? Richa, एक बार स्नैपशॉट ले लो सब. 3, 2, 1. अदिति पटेल, हेलो. अभी क्वेश्चन शुरू करना है. Richa, you came late. Now you can see here covalent character is inversely proportional to ionic character. We know that. Kuldeep Verma, hi. Now covalent character is inversely proportional to melting point, and covalent character is inversely proportional to solubility in polar solvents like water. Okay. Grateful for this list. Thank you. We are ready for questions. Very good. Covalent character is inversely proportional to boiling point. Covalent character is directly proportional to size of cation or size of anions directly is directly proportional to charge of cation or anion. And covalent character size of anion, that's what directly I said, and is directly proportional to polarizing power. So many logics are there. So many logics. Are you ready? Can I clear this? Can I clear this? Now, which is most ionic? We'll do questions. We'll do questions. It is an exemplar one. It is an exemplar one, and I'll make you to do questions. Question number 1. Which is most ionic? So here covalent character is directly is directly proportional to anion. Here NF minus, O2 minus, N3 plus, N3 minus, so that less charge on it, so that it is going to have most ionic character. Got it? Yes, it is not C, it is most ionic. And the correct order of increasing ionic character. Ionic character, A question ka. These are exemplar. You just try to understand. So, you are increasing ionic character. Mind it, increasing ionic character or increasing covalent character. And the question is what exactly is asking. Sometimes it is going to be in the negative sense also. Take care of it. Right? So, here you can see children, beryllium bromide, magnesium bromide and calcium and barium bromide. है ना? Now, in this beryllium bromide, magnesium, barium and calcium bromide. So, as barium plus 2 is having the large size, all are bromide. So, you take the variables of the cations. So, that A is the correct answer. Right? Aditi, that's good. Yes. Next, question number 3. Question number 3. Least melting point is shown by the compound. Least melting point means more covalent कौन सा होगा? इशिता, more covalent कौन सा होगा? Yes, that's good. Look at this. Least melting point is shown by most covalent compound is going to be SnCl4. Pb2 plus, no. Size of cation, aluminium, tin, lead, Pb2 plus. PbCl2. Why? Because size you have to take. Tin size is very small than lead 2 plus. Right? And question number 4. Which of the following is the order of increasing covalent character?
लिथियम क्लोराइड CCl4 का ज्यादा है, बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड. So that you can say which of the following is the order of increasing covalent character is going to be this one, option C. Hi, Richa, where did you go? I am observing you are coming and leaving, or I don't know. Okay, let's see direct questions. Now, okay, yeah, questions. Ease of formation of anion is favored by. Who is going to give the answer here? Jaldi, make it fast. Make it fast. Low value of ionization energy, low value of electron negativity, and low value of electron affinity, high value of electron negativity. So, ease of formation of anion, okay, high value of electron affinity is the answer. Yes, it is. Network issue ho gaya. Okay. So, it is Aditi, you said is correct. You can see when this anion or cation, when you see low, high electron negativity and electron affinity and these kind of terms now in the NEET examination, it is little confusion induction options. You have to take your mind stability. And which of the following is easily formed calcium chloride, calcium bromide, potassium chloride and potassium bromide? Who is going to get it? कोई problem नहीं Richa Sharma. Now, who is going to get easily? So, in order to form this, cation easily should be formed low ionization energy, and it is for potassium, and anion it should have the high electron affinity, that is chlorine, potassium chloride. Okay, your answer Richa, absolutely correct. Aditi, absolutely correct. What about Xavier? Okay. Or one more student, who is that? Okay, one more question, is that fine? Yes, number of electrons transferred from aluminum during the bond formation in aluminum fluoride. How many electrons? See, fine. Uday Niwal, yes, Uday, your answer is correct. It is C. Aluminum loses 3 electrons to gives rise aluminum 3+. So that 3 fluorines takes 3 electrons, gives rise 3F-. So that aluminum fluoride is formed. 3 electrons. Okay? Fine. Very good. Nice gathering in today's class. Very good students. And you can see one more, the compound with highest melting point. So these method of questions are important. NEET examination, direct NEET examination questions. उदय, ये Al3+ fine, और क्या चीज है बोलना? द कंपाउंड इज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, जिसका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है उसका melting point ज्यादा होगा. My dear students, give the answer. You want to say D? Oh, very good, nice. और क्या चीज है? ओके उदय, आपका आंसर क्या होगा? More ionic, highest melting point. So more ionic, है ना? Yes. You look at this. More ionic means more ionic. A combination. She is good. A combination. You can see sodium plus.
F minus, Cl minus, Br minus, I minus. अब बताओ ट्रिक का हिसाब से उदय, आप गलत सोचा ना? यस, नाउ आंसर सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, है ना? हर चीज पकड़ने का सुरेश सर हमेशा आपको ट्रिक बताने वाला है ना? हाँ, सही बात है बेटा। अभी तो और एक क्वेश्चन है, लैटिस एनर्जी एंड ओके, लैटिस एनर्जी विल डिस्कस इट लेटर। ओके, लैटिस एनर्जी विल डिस्कस इट लेटर। आई विल अदिति पटेल, यस यस, हम एक ट्रिक बता दिया, उस समय में आप नहीं है। ओके अदिति, सो एक ट्रिक है, मैं एक ट्रिक दे दिया। अगर कैटायन का साइज बड़ा है, एनायन का साइज कम है, ये कॉम्बिनेशन मोर आयोनिक होगा। अभी उल्टा मान लो, कैटायन साइज कम है, एनायन साइज बड़ा है, अभी ये कॉम्बिनेशन में मोर कोवलेंट होगा, मोर कोवलेंट होगा। ट्रिक याद गया? यस, नाउ यू अंडरस्टैंड Aditi, now you understand, you did not have to retract your messages. Clear? Yes, 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 yes. Now let us talk about, yes, among the following compound, the one with the greatest ionic character. Abhi bolo, greatest ionic character. Richa, घुमा के वहां आ रहा हूं मैं। Yes, it is greatest ionic. Who is going to give the answer? I am checking the chat box. Turn up सुरेश कुमार। अरे NaCl, अरे मेरा नाम रख के आप गलत आंसर दे रहे हैं सुरेश। इशिता करेक्ट, सुरेश। So here it is cesium chloride. Okay, sodium plus potassium plus cesium plus rubidium plus and सब chloride है ना? हाँ, chloride. Who is the best ionic character? Yes, it is. So you can use that trick and you can get great number of questions. Yes, अरे एक मार्क 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स आपका नीट का फेट भी बदल जाएगा, है ना? Yes, it is. Suresh Kumar, you understood. I hope you can see that, right? So according to Fajan rule, the covalent nature of ionic compound is favored by, it was a previous AIMS question. अरे these sessions are very important, है ना? मत छोड़ना। सो सारे के सारे क्वेश्चंस आप कर रहे हैं ना, नोट्स आपका फीड PDF फॉर्म में आपका टेलीग्राम चैनल में मैं बता रहा हूँ, आपके मिलेगा। सो यू कैन गेट इट। सो अकॉर्डिंग टू दैट आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज द कैरेक्टर and what is the option for this. You want to say C? Great. Copycat. Great. Who is that copycat C? उदय, that's great. Small cation and large anion हमारा zoologic का ये क्वेश्चन बना दिया, so that it is, है ना? ऑप्शन C. So why not? आप सही किया। Yes, उदय निवाल, very good. Hope you are all enjoying the session, है ना? Very good. Now even though the crystal, okay, leave it, that will do it because lattice energy आना है। Yes, order of covalent character for aluminum, AlF3 is less than AlCl3 less than AlBr3 AlI3. The best explanation according to Fajan rule is, so आपका स्टेटमेंट सही दिया। So my dear students, here
Statement 1 and statement 2 type of questions are there in NEET examination. So मान लो ये statement 1 होगा, मान लो ये statement 1 होगा, ये statement 1 होगा and statement 2 हो सकते हैं ना, and you can relate statement 1 and statement 2. Thank you, Uday Niwal. So I am expecting what is the answer for this. Yes, thank you very much, Uday Niwal. Yes, it is. Yes, it is. Come on, who is going to give? And पूरा ये statements जो है ना, ये पढ़ने का आदत रखना. Yes, it is. Life is chemistry. Ramesh, am I right? Ramesh, am I right? Is that life is chemistry? Ramesh, am I right? Okay. So it is going to be, yes, it is. And Richa, Ishita, Uday Niwal, what is the answer for this question? फटाफट copycat कौन है यहाँ पर? Copycat. Who is going to give the answer there? Yes, it is going to be option 2. The polarizability of halide ion increases with increase in the size. That is the reason why सबका aluminium +3 है, सबका aluminium +3 है, and I minus is large size, bromide is small, a small, large. So that I just want to say option 2 is going to be the correct answer for this question. Mind it. Thank you, Ramesh. Yes, it is. Yes, it is. है ना? Very good. Now, polarization is the distortion, और एक question है, polarization is the distortion of the shape of anion by adjacently placed cation. And which of the following statement is correct? ये again मैं आपका आ रहा हूँ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 का जैसे क्वेश्चंस, ये मॉडल ऑफ क्वेश्चंस का कनेक्टेड है. सो हम क्या कर रहे हूं, ये नीट सेशंस स्टेप अप 20 नीट स्टेप अप 2025 प्रोग्राम में ये रेडियो सेशंस नहीं दे रहे हैं, ये इंटरैक्टिव सेशंस है. सो वी आर गिविंग कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस दैट डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर नीट एग्जामिनेशंस. ओके, so we are doing the best for my students, है ना? Just I want to know what is the answer for this question. Risha, Xavier and Copycat and Ramesh and yes, Naveed, come on. Yes, you want to say yeah, very good. अरे Copycat मतलब बार बार देना है ना. Right. So it is going to be maximum polarization is brought about by cation of a high charge. Yes, of course, a large cation is likely to bring about a large degree of polarization. ये सही बात है, एक गलत बात है ना? Yes, it is. Yeah. And minimum polarization brought about by cation of low radius. No. Right? Now, और एक चीज है, which of the following has a highest polarizing power? अब बोलना आंसर जल्दी फटाफट. Yes, it is. Say C, A, B, C, D. Who is going to give that? Sodium. ना. ओके, और क्या चीज है? और कुछ आंसर देना फटाफट. इशिता ऑप्शन बी. हाँ, करेक्ट. Yes, correct. Uday, correct. Its answer is correct. So, polarizing power is directly proportional to charge on ion. So that aluminum is the answer.
Hope you are doing great. We had a great swell of the sessions. Today we discussed about Fajan rule and ionic compound quotient Lewis theory. And next session we are Varshil. We are going to do about the covalent bond and valence shell electron pair repulsion theory. And stay tuned. And tomorrow may not be having a class. I don't know, but you will be having a next class when the class is being scheduled. And every day actually it will be there. One day I just want to take a break. Okay, so take care of you, and signing off, Suresh Avari. And at final, you please like the session and share with your friends and subscribe to the NEET channel. And signing off, Suresh Avari from Infinity Lane. God bless you. Thank you.